सो लास्ट क्लास आम देखी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज क्लास में देखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, सो this is the suppose m1 and m2 are two particles. Let r with the distance between them. r12 is the unit vector directed from m1 to m2, and r21 is the unit vector directed from m2 to m1. Similarly, force acting on m2 by m1 is f21, and force acting on m1 by m2 is f12. Okay. So the gravitational forces exerted on both the particles are equal and opposite. Right. Consider two bodies of mass m1 and m2 situated at a distance r apart, from each other. Okay. Let the displacement vector r12 is directed okay, let r12 is the displacement vector is directed from a particle of mass m1 to another particle of mass m2. Now, so let r12 be the displacement vector directed from m1 to m2. And f21 be the gravitational force exerted on m2
by m1 ହେଲା f21 कौन f21 होची फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 by m1 m2 ऊपर m1 जति फोर्स पकोची हां सेरा होची f21 ओके then f21 equal केता आसीबो f21 equal to minus g into m1 and m2 by r12 square into r12 cap okay जेहेतु f21 रो डायरेक्शन जहा r12 रो डायरेक्शन ताहा सो f21 इक्वल केते minus g m1 m2 r12 square into r12 cap हला हम जानछे f इक्वल g m1 m2 by r square आ जेहेतु ग्रेविटेशनल फोर्स रो अट्रैक्टिव फोर्स सेति रे नेगेटिव साइन दिया हला हला the negative sign is due to the fact that both the particles are attractive in nature la both the particles are attractive in nature similarly f12 with the gravitational force exerted on m1 by m2 हला so m1 ऊपर m2 जति फोर्स पकोछ फोर्स एक्टिंग on m1 by m2 is the f12 okay then f12 equal केता आसीबो then f12 equal केता आसीबो जेतो f12 डायरेक्शन जहा हां देखो f12 डायरेक्शन जहा r21 डायरेक्शन ताहा सो हम केते लिखिबा f12 equal हम लिखिबा केते minus g into m1 m2 by r21 रो स्क्वायर into r21 cap r21 cap कोन r21 cap होची r21 डायरेक्शन रे गोटे यूनिट वेक्टर हला अच्छा इडी r21 आ r12 दिले जगह ऑपोजिट डायरेक्शन सो हम r21 बदले केते लिखिबा माइनस r12 लिखि परिबा r21 equal to minus r12 cap again r12 equal to r21 हा बुझो छी तमरो एडा होचे r21 जति r12 मैग्नीट्यूड समान दिले जाय बुझो छी सो इडी हम केते लिखिबा f12 equal to हम लिखि परिबा minus g into m1 m2 by r21 बदले r12 हम पुट कर परिबा सो r12 रो स्क्वायर हां r12 रो स्क्वायर into r21 cap equal to minus r12 cap पकेबा minus r12 cap हैला बुझो छी equal to this is equal कता असला मु एटा गुटे के अरेंज करथिबी माइनस ऑफ माइनस टी कॉमन बाहर करो minus g into m1 into m2 by r12 रो स्क्वायर into r12 cap
पुट कर परिया ते लिख परिया हला एति जति एति सेति सो देखो -g m1 m2 r1 * स्क्वायर * r12 कैपिटल केते नै छ तमे f21 एति बदल रे सो एटा केते असला इक्वल असला माइनस दिस इज इक्वल असला माइनस और एति बदल हम केते पुट करबा एति बदल हम पुट करबा केते f21 हला सो हमर केते असला f12 इक्वल असला माइनस f21 हला that is f12 इक्वल हमरा असला that is हमर केते असला f12 equal to minus f21 हला बुझौछि इडा दियो इक्वेशन नंबर 1 इडा दबा में इक्वेशन नंबर 2 हला तापरे इडा दबा में केते इडा दबा में इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 हाँ सो f12 कोन f12 इक्वल माइनस f21 असला f12 कोन f12 होची फोर्स एक्टिंग ऑन m1 by m2 हला ए डायरेक्शन f21 कोन फोर्स एक्टिंग ऑन m2 by m1 ए डायरेक्शन सो इधर जे कोन असला ऑपोजिट डायरेक्शन सेति में f12 इक्वल माइनस f1 दैट मींस कोन बुझो f12 जति की f21 सेति दैट मींस बॉडी 1 ऊपर m1 ऊपर m2 जति फोर्स पकोची m2 ऊपर मधो m1 सेति फोर्स पकोची दैट मींस से माने कोन होची से माने मैग्नीट्यूड इक्वल ये तापर जति फोर्स पकोची से ऊपर सेति फोर्स पकोची किंतु से माने मैग्नीट्यूड इक्वल किंतु से माने डायरेक्शन कोन इतरा कोन से माने ऑपोजिट डायरेक्शन सेति में नेगेटिव साइन ओडे दिया हला this shows that this shows that the gravitational forces between two particles are equal in magnitude but opposite in direction equal in magnitude but opposite direction hela and these forces and एमान कोन f1 to f21 मैग्नीट्यूड समान किंतु माइनस साइन रहला डायरेक्शन ऑपोजिट हला आउ समान या पर जति फोर्स पकुचे सिया पर मत सेति फोर्स पकुचे किंतु डायरेक्शन ऑपोजिट रोच दैट मींस समान कोन एक्शन डायरेक्शन पेयर ओडे बिहेव करचंदी हला and these forces form an action reaction pair upon each other हला समय कोन माने एक्शन रिएक्शन पेयर रे बिहेव करछ बुझछ
तापर हम देखिबा characteristics of gravitational force. Characteristics of gravitational force. ना कौन कौन सब characteristics अच्छे था हमें discuss करियो ना कौन characteristics अच्छी ना gravitational force is always attractive in nature. It is always attractive in nature. Clear? बुझी सेकंड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स होची सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स कोन इफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स. दीटा पार्टिकल सेंटर रु जदी गोटे लाइन जॉइन करथो जदी फोर्स ता ऊपर डिपेंड करथो ता होची सेंट्रल फोर्स. आर ऊपर डिपेंड करछि F इक्वल टू gm1 m2 r स्क्वायर. आर ता कोन दीटा पार्टिकल सेंटर डिस्टेंस होची r सेतमे जे तो r ता r ऊपर डिपेंड करछि सेतमे एटा होची सेंट्रल फोर्स हला. Central force कोन it is a force that acts along the line joining the center of the two charges but two particles हला. जे तो ये ऊपर r ऊपर डिपेंड करछि सेतमे ग्रेविटेशनल फोर्स ता होची मन गोटे सेंट्रल फोर्स. सेते कूलम्स फोर्स मते सेंट्रल फोर्स हला. F इक्वल 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर से मते सेंट्रल फोर्स. जो फोर्स r ऊपर डिपेंड करतो से होची सेंट्रल फोर्स हला. सो नंबर बी हला this is a central force which acts along the line joining the centers of the two particles. Joining the centers of the two particles. हला. तापरे कोन ग्रेविटेशनल फोर्स ता एक्शन रिएक्शन पेयर रे बिहेव करियो. m1 m2 रे जति फोर्स पकेबो m2 मध्ये m1 ऊपर सेतिकी फोर्स पकेबो जेतु हमरा असला f1 इक्वल f2 असला किंतु सेमानो डायरेक्शन ना ऑपोजिट रहइबो हला. सेति में सब ग्रेविटेशनल फोर्स रे एक्शन रिएक्शन पेयर रे बिहेव करियो. ओके दे फॉर्म an action reaction pair अपन हला समान रे कोन एक्शन रिएक्शन पेयर रे बिहेव करियो हला. तापर कोन नेक्स्ट पॉइंट हला इट इज independent of the presence of other particles in the medium. मीडियम जदि आ किसी पार्टिकल रहिबो ये ता ऊपर किसी डिपेंड करिवो नाही हला. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स इन द मीडियम. ओके तापरे ग्रेविटेशनल फोर्स ता को मीडियम रो किसी डिपेंड करिवोनी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन which the two bodies are situated हला. जो मीडियम रहला मत समान ग्रेविटेशनल फोर्स सेम. दीरा पनर m1 m2 दी जण वाटर मीडियम रे अछंदी
जति फोर्स आसीबो तमरो एयर मीडियम रहले मतलब सेति फोर्स रहइबो हला मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो नाही इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इट इज independent of the medium in which the two bodies are situated. Lah. It is independent of the medium in which two bodies are situated. Lah. Ida house tomara kono characteristics of gravitational force. Lah. Ida porikha asibo. What are the characteristics of gravitational force kono? Gravitational force in vector form. Characteristics of gravitational force. Lah. A question uda tomara 2 mark 3 mark question re as. Okay.